अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम लोग mth601 के क्विज़ नंबर 1 को स्टार्ट करने लगे हैं और यही जो क्वेश्चंस हैं ये बार बार आज के जो क्विज़ है उसके अंदर आ रहे हैं। तो चलें इस क्विज़ को शुरू करते हैं। अगर आपने इस क्विज़ को देख लिया तो फिर मैं समझता हूँ कि आपके 10 में से 10 नंबर पक्के आने चाहिए। इन पर द पॉसिबल वेरिएशन इन एक्टिविटी टाइम्स इज मेजर्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज डैश ऑफ द डिफरेंस बिटवीन पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक टाइम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, 1, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ नेटवर्क फ्लो डायग्राम टू जॉब्स आई जे एंड आई के ऑफ 9 and 6 days duration leaves the node I. Then which of the following will late start time for I if it provides that both ij and ik finish late on 12th and 8th day? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, 3rd day। नेक्स्ट है जी, which of the following relation is true among the possibilities time in per? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, pessimistic most likely optimistic। नेक्स्ट है, in network flow diagram if two jobs ij in and both mn and j and o days denotes respectively on 4th day, then need activity containing n as head event cannot start until the entering। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, mn। नेक्स्ट है, in a network flow diagram if an event is the predecessor of 3 other event then how many dummies are inevitable to include the network? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है जी, डमी एक्टिविटीज इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो डमीज एक्टिविटीज जो होती हैं उनको डॉटेड लाइन के जरिए जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। अ नेटवर्क फ्लो डायग्राम कैन हैव डैश क्रिटिकल पाथ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2, मल्टीपल क्रिटिकल पाथ। Which of the following value is correct for the expected time of an activity having optimistic, pessimistic and most likely times as 4, 8 and 6 days respectively? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2, 6। Which of the following phases are performed to find the critical path in CPM? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, अर्ली एंड लेट फिनिश प्रोग्राम। नेक्स्ट है जी, अ नेटवर्क फ्लो डायग्राम कैन हैव डैश ऑफ डैश क्रिटिकल पाथ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, मल्टीपल क्रिटिकल पाथ। नेक्स्ट है, which of the following value is correct for the expected time for an activity having optimistic, pessimistic and most likely 4, 8 and 6 days? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2, 6 डेज। अच्छा, आप बार बार देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो कि वही क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। तो इस तरह आपके भी जो पेपर हो गया उसके अंदर भी रिपीट हो कि ये क्वेश्चन आएंगे और इस फाइल को आपने अच्छे तरीके से देखना है। Which of the type of path will be critical in network flow diagram? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, longest path from starting node to end node। नेक्स्ट है, in a project a network diagram shows the dash relation of interrelated activities among their corresponding activities time। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है deterministic and probabilistic। नेक्स्ट है, in a development project if an activity mn of 7 days duration starts late on 5th day then which of the following will be latest finish time? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, 12 day। नेक्स्ट है जी, इन पर द पॉसिबल वेरिएशन इन एक्टिविटी टाइम कैन बी मेजर्ड फ्रॉम डैश ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट है जी, इन द फेज ऑफ लेट स्टार्ट एंड लेट फिनिश टू फाइंड द क्रिटिकल पाथ इन नेटवर्क फ्लो डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी टेकन एज लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ द फाइनल इवेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, अर्ली फिनिश ऑफ फाइनल इवेंट। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरीज ऑफ द ऑपरेशनल रिसर्च। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, feasible solution। In a network flow diagram for an activity ij of 6 days duration, if it late finish time of 9 days, then which of the following will be late start time? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, 3 days। Which of in the phase of late start and late finish to find the critical path in network flow diagram, which of the following will be taken as latest finish time of the final event? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, early finish of final event। नेक्स्ट है जी, in per possible variation in activity time is measured from standard deviation which is 1/6 of the difference between pessimistic and optimistic। अब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आ रहा है, 1/6। Which of the following is not problem of probabilistic technique? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके बाद है जी, in a project a network diagram shows the dash relationship of interrelated activities along their corresponding activity time, deterministic and probabilistic। नेक्स्ट है, इन अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इफ एन एक्टिविटी mn of 7 days duration start late on 5th day then which of the following will be its latest finish time? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, 12 day। In a development project if an activity ij of 6 days duration start late on 3rd day then which of the following will be the latest finish time? 9th day। Which of the following relation is true among the probabilistic time in per? तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2, probabilistic most likely optimistic। ओके जी, नेक्स्ट है, इन अ नेटवर्क फ्लो डायग्राम टू जॉब्स आई जे एंड आई के ऑफ 9, 6 days duration leave the node I, then which of the following will be late start time?
for I if provided that both I j and I k finish late on 12th and 8th day। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 3rd day। In a network flow diagram for an activity ij of 6 days duration, if it late finish time of 9 days, then which of the following will be its late start time? इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 3 days। Dummy activities is represented by dotted line। Duration of dummy activities is 0। The mean and variance of problematic nature of activity times in perf are expressed by dash distribution। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 बीटा। While finding the critical path in the phase of early start and early finish computation, we start from dash event and proceed calculation from left to right up to the final event। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है we start from first event। PERT is an acronym for Program Evaluation and Review Technique, option number 3। In project management, program evaluation and review technique is based on dash times। इसका राइट ऑप्शन है वो है जी problematic। About which of the following is true that they only signify with the passage of time the beginning and ending of some activities under the consumption of resources। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 dummy। While finding the critical path in the network flow diagram, if an activity starts and finish late on 3rd and 9th day respectively, then it will completed in dash days। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी 12 days। In the phase of early start and early finish, to find the critical path in the network flow diagram, for the first node we start with time I is equals to 0, third option। While finding the अच्छा ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा है जी the mean and variance of problematic nature of activity time expressed by beta distribution। While finding the critical path in the phase of late start and late finish, we start from last node। The computation are performed from right to left up to the beginning of event। Next, in a network flow diagram, the activity ij of 6 days duration, if its late finish time is 9 days, then which of the following will be late start time? 3 days। पर्थ वाला भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा the task which is executed by the usage of resources and time is called activity। While finding the critical path in the phase of early start and early finish computation, we start from the first event, proceed calculation from left to right up to the last event। Which of the following is the operational research procedure? Model construction। Next, 1948 Morse defined or the term OR has heretofore been used to connote various attempts to study operation of war by dash from a more general point of view or to be considered to be attempt to। इसका जो right option है वो है option number 1 scientific method। While finding in the network flow diagram, the predecessor relationship among the activities are indicated through nodes। In a network flow diagram, if an activity starts earlier after 2 days and finish earlier on 5th day, then which of the following will be its completion time? This is the right option है option number 3 3 days। Which of the following is not a problem or problematic technique? This is the right option है वो option number 1 linear programming। In a network flow diagram, if an event is the predecessor of 3 other events, then how many dummies are inevitable to include in the network? This is the right option option number 4 2। While identifying the critical path of the network flow diagram, the late start and late finish phase confirms the project start time is 0। Next है operational research is the application of dash method to decision making। Right option है all of these। Which of the following is not the operation research problem solving step?